The topic we are going to discuss about is solids, and the subtopic is types of solids. Let's see first what are solids. Solids are those substances which are rigid, hard, have definite shape and definite volume. Atoms, ions, and molecules that make up solid are closely packed. Particles are held together by strong cohesive forces, and they do not move at random. So on the basis of arrangement of constituent atoms, ions और molecules, solids को हम दो types में divide करते हैं, crystalline solids और amorphous solids. वो solids जिनमें three dimensional pattern है उन्हें crystalline solids कहते हैं, जिनमें irregular pattern है they are called amorphous solids. So first are crystalline solids. Crystalline solids वो solids हैं जिनमें atoms, ions और molecules three dimensional definite pattern में arrange होते हैं. जो ज्योमेट्रिक पैटर्न है वो थ्री डायमेंशनली एक्सटेंड कर रहा हो. एग्जाम्पल क्वार्ट्ज, पायराइट या जेलिना. नेक्स्ट आर द अमॉर्फस सॉलिड्स. अमॉर्फस सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स में कोई ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होती. फॉर एग्जांपल ग्लास, प्लास्टिक, रबर या ग्लू. सो ग्लास या ग्लू जो है दे आर द एग्जांपल्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स. So we can convert crystalline solids into amorphous solids. How? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आप पहले मेल्ट करें और फिर उनको रैपिडली कूल करें ताकि जो उनके पास इतना टाइम ही ना हो कि वो अपने एटम्स आयन या पार्टिकल्स को पहले ऑर्डरली अरेंज करें एंड देन दे फ्रीज. जब आप उसको बहुत जल्दी कूल कर लेंगे तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होगा और जहां पे भी रेंडमली पार्टिकल्स पड़े होंगे वो वहीं पे कूल होके एक अमॉर्फस सी शेप अटेन कर लेंगे. So let's discuss a question. Ionic solids are characterized by low melting points, good conductivity in solid state, high vapor pressure, solubility in polar solvent. And the correct option is solubility in polar solvent. क्योंकि ionic solids में ionic bond होता है, polar होते हैं, that's why they are easily soluble in polar solvent. So this was all about the solids and its types. I hope you have understood it well and thank you so much.